Housing is an integral part of children's living condition. Lack of or insecure living conditions deprive young children of their basic rights to health, education, nutrition, and protection. A technical group on estimation of urban housing shortage was constituted by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation to estimate the urban housing shortage in the country at the beginning of the 12th five-year plan. And according to it, the total requirement of housing units during the 12th plan period is estimated at 18.78 million. The present housing policies are an arrangement of pretentious expression in policy documents. It has not included the ground realities of housing problems faced by the urban poor. The policies only aim at building a concrete structure in the name of a house. The family requirements, needs of the young children, and the neighborhoods are not even considered while preparing the detailed project reports. आम घर छोट पांच जन 6-7 जन परिवार रोचु रहिले से छोट घर होबारु आमर परिवार रहिबा को असुविधा होची आमको सेठी जोड़ी आम रोषे करचु सेठी आगा खाऊचु सेठी आगा पूजा करचु सेठी आगा आम रहूचु सोऊचु बाहर को झाड़ा गले लाज लगुची साप सुपार भय थाउची बात्या बेले आम घर भांगी जाइथिला आम पालू पकई रोथुलु आम लाइन नथिला असुविधा होउथला बसी हम पाठ ले पढ़ी पारु नहीं आमर पूजा घर रहिबा दरकार आम रोषे घर रहिबा दरकार सोइबा रूम रहिबा दरकार पाठ पढ़िबा रूम रहिबा दरकार आमको छात घर रहिबा दरकार मोर राजधानी रे बहुत गुड़े घर अच्छी 400 रु अधिक मात्रा बस्ती अच्छी बस्तीर घर गुड़िक भल नुहे जो शुद्ध वायु पशि पारना से घरे झरका मान घर मानक शुद्ध जल आलोक इत्यादि जापारना यहीपरि विभिन्न समस्या अच्छी जपरी भूमिकंप बात्या बन्या इत्यादि बस्तीर घर मानकर बहुत असुविधा सृष्टि होची घर भागी जाउची बहुत विपद मध्य सृष्टि होची एवं से घर भल भल वायु जाई पार नै पिला मानकर बेले बेले निया मध्य लागि जाउची पिला मान मृत्युवर्ण करचंदी लोक मानकर जीवन हानि मध्य घटुची आम योजना रे थिबा आरएवाई योजना रे हमको बहुत सुविधा घर मिले जो कि व्यवस्था थी पाइकिना थी खेलवा खेल पड़ी माने भितर खेलवा जगह टिके जपरी अनेक जगार घरे रहा गोटे पाखे माँ पिला छुआ इत्यादि रही था बापा रही था भल सुविधा न थाए समस्त गुंजी गंजी रही था तेणु आमको आरएवाई योजना द्वारा भल घर मिलू से घर में आम भल से रही पारू जपरी Taking into account the persistent growth of urban population and the difficult economic environment for the poor, the housing problem will further increase unless concerted efforts are taken to ameliorate the living conditions of young children living in urban poverty. But the question is, how far these regulations and policies will be child-friendly, implemented, monitored, and enforced. To have access to water is not a matter of choice. Everyone needs it. Every year, unsafe water, coupled with a lack of basic sanitation, kills at least 1.6 million children under the age of 5 years. Access to adequate safe water supply is a fundamental need and a human right. Equitable access to improved safe drinking water is essential to ensure good health. Despite investments in water and sanitation infrastructure, many low-income communities in India continue to lack access to safe drinking water. Around 1,000 children die in India every year due to diseases caused from polluted water. As per Census 2011, 43.3% of households get their drinking water from outside their living premises. Most of the times, it is observed that parents engage children in the collection of water as the waiting time is more and supplies irregular. This can result in damage to neck, head, and spine because of carrying heavy loads
and preventing the child from school attendance. According to a report by UNICEF and Food and Agriculture Organization, 45% of India's children are stunted, and 6 lakh children under 5 die each year, largely because of inadequate water supply and poor sanitation. It is also estimated that around 37.7 million Indians are affected by waterborne diseases annually. 1.5 million children are estimated to die of diarrhea alone, and 73 million working days are lost due to waterborne diseases each year. घर द्वारा आम सारे गोटे ही पाइप अच्छी गोटे पाइप रे जल के बेले बेले आसे और बेले बेले आसे ना ता द्वारा आम पीवा पानी आम गाधेबा को बहुत असुविधा होची शौचालय मध्य जीवा को बहुत असुविधा होची रांधिबा पई असुविधा होची आम स्कूल को मध्य ठीक टाइम रे जाई पारुनु न जीवा द्वारा आमको सार बा के गाली भी मध्य दउचंदी और आम दूषित पानी एथि पई बोली आम दूषित पानी मध्य पीउचु दूषित पानी पीवा द्वारा आमको बहुत रोग होची रोग होबा द्वारा आम स्कूल को जाई पारुना स्कूल को नजर आम पाठ पढ़बार बहुत असुविधा होची आम सरकार को विनीत अनुरोध करछु जे आम साही के गोटे पाइप दियंतु से पाइप रे सबुदिन एमती पानी आसतुओ पानी आसले आम पानी पी पारिबु रांधि पारिबु स्कूल को मध्य जाई पारिबु आम बस्ती में पानी समस्या अधिक रही जहाँकि म्यूनिसिपालिटी माध्यम पानी जो सब स्लम को आसूँ आम स्लम को आसुनी जहाँद्वारा कि लोक मैंने खोला कूहर पानी पीउछंती खोला कूहर पानी पीवा द्वारा से विशुद्ध पानी पी पार ना जद्वारा कि वर्षा किसी हवा द्वारा से पानी गुड़ाक प्रदूषित हो जाद्वारा से रोगरे आक्रांत होती शिशु मान पतला झाड़ा खास ठंडा इत्यादि रोग आक्रांत होती तेणुक मुझे अनुरोध करुँच जहाँकि म्यूनिसिपालिटी मध्यम जो म्यूनिसिपालिटी द्वारा सब स्लम को जो पानी आसूँ से पानी आम बस्ती को आसू एवं यही समस्या आम शिशु एवं आम बस्ती 8000 हाराहारी परिवार मुक्त हो पारे आ गोटे भी अच्छे जहाँकि लोक मैंने बाध्य होती कि अन्य जो लोक मैंने जो मोटर की बोर करेंगे से माध्यम से पानी किणिकी भी पीछे आम अंचल पानी आसुवा माँ और भूणी माड़ी उड़ी होती आम कहूँ दिया आम बस्ती को सुधा बेले पानी आसू. In a survey conducted by the Urban Development Ministry in 1,405 cities in 12 states, it found out that around 50% of these cities don't have a proper water supply system. Even if the households have access to piped water in around 80% of these households, the average supply is less than 5 hours per day. Over 70% of the households in the analyzed cities do not have access to toilets or a sewerage system. Despite significant investment in urban development, above 37 million people in Indian cities resort to open defecation. The figures provided by 2011 Census of India say that nearly 12% of urban households resort to open defecation and another 8% use public or shared toilet facilities. Recent literature suggests that open defecation causes stunting among Indian children, particularly in more dense urban areas. माझं नाव काजल मिलिंद जाधव आहे आणि आमच्या बस्तीमध्ये पाण्याची सोय असावी आणि गटारे ढाकलेले व स्वच्छ असावे. टॉयलेट आमच्या बस्तीमध्ये हर एक घरामध्ये पाहिजे व आणि लहान मुलांसाठी सेपरेट टॉयलेट असावे. आम साइड ड्रेन नाही तेणुक अन्य पानी अपरिष्कार पानी सब रोड रे भासुची जहाँद्वारा कि लोक मैंने जावासवा कर असुविधा असमय भी मलेरिया डेंगू आदि रोग होद्वारा कि लोक मैंने रोग आक्रांत होती तेणुक एठार अपरिष्कार पानी जाऊँगी ड्रेन नथिबारु सब लोक इयाड़ सियाड़े पानी छाड़ुंट जहाँद्वारा कि घर मानक पशु वर्षा दिने अधिक जोरसे वर्षा हेले सबुआड़े पानी पशुची घर मानक भी पानी रोचे जहाँद्वारा कि घर मान सब ओदा घर भितर भी अपरिष्कार पानी पशुची छोट पिला खेलला बेले भी से बालीमाटी खावा द्वारा अपरिष्कार पानी खाई जहाँद्वारा कि रोग आक्रांत होती.
माझं घर कांतीनगरात आहे आमच्या घराच्या इथं खूप नाल्या गटार आहेत तर त्या गटारावर झाकणं नाही आहे त्या गटाराचा वास आमच्या घरात येतं मग त्याचा आमच्या घरातले सगळेजण आजारी पडतात पाण्याची लई समस्या आहे आमचं पाणी जातं तर आम्ही भाजी मार्केटहून आणतो कधी कधी तर आमचे गटारासोबतच ती लाईन जुळलेली आहे गटाराचं पाणी आमच्या पाईपात घुसतं आणि तेच आम्ही पितो आणि आमच्या घरातले आजारी आम विशेष कर जो पाइखाना बहुत समस्या रोचे आमर भुवनेश्वर तो प्राय अच्छी 400 रु अधिक बस्ती अच्छी से बस्ती मान विशेष कर पाइखानार समस्या अच्छी एवं आम विशेष कर जो आमर अच्छी झील मानी मो पर छोट छोट पाई जो आम जब पाइखाना तो बहुत मानते जब बाहर बहुत लज्जा लगे लज्जाकर कथा अटे जदि आम पाइखाना जीवार अच्छे तेज आम पाहांतर जाऊँ ना सन्ध्या बेले जाऊँ जेहेतु आमको लोक मैंने देखिए कि लज्जाकर कथा हेनी से विशेष कर जो पाइखाना जो ना से बहुत असुविधा होती आम मानी आम चाहूँ कि मानने पाइखाना करा तो मैंने संभव ना जो सरकार आम समस्त गोटे गोटे करेंगे तेणु आम चाहूँ आम कम्युनिटी मैंने लाट्रिन रहा दरकार गोष्ठी पाइखाना रहा दरकार जहाँद्वारा आम मान बस्ती समस्ते जीवास करें पाइखाना एवं विशेष कर आम मान शिशु मैंने बेसी उपकृत हे As per the newly released census data of 2011, over 65 million people live in slums, up from 52 million people in 2011. Though the slum population has grown slower than the average urban population over the last decade, provisions of adequate sanitation facilities have been lagging in India. 66% of the households in the urban slums have latrines within their premises. 57.7% of households have water closet latrines, 6.2% of households have pit latrines, and 2.2% of the households have other latrines. 15.1% of the households in urban slums have public latrines, and 34% of households do not have latrines within their premises. However, various reports do not show the accessibility of these services to the general population living in slums. %70 of children living in urban poverty are deprived of playgrounds. As the slums have no open spaces and playgrounds, children in the slums develop mental complexes and physical imbalances. Research suggests that active play has the potential to make a valuable contribution to the overall children's activity while providing additional cognitive, social, and emotional benefits. ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳା ବୁଲା କରିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଭାବିବା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଭଲରେ ଖେଳିପାରିବୁ ହେଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଜାଗା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ଥାଉ माझे नाव सूरज कैलास प्रधान आहे आम्ही आठवीमध्ये शिकतो आणि इथे मला खेळायला ग्राउंड भेटत नाही इकडे खाली लोकांना बोललं इथे कचरा टाकू नका तर ते लोक टाकतात आणि इकडे खेळायची खूप समस्या आहे आणि इकडे आमचा बॉल मारला की जागा कमी आणि ग्राउंडमध्ये गटरात बॉल गेला की तो घाण होतो आम्हाला ते उचला लागतात कोंबडीचे खूप पक्का आहेत पण क्लब आंबोजवाडी आम्हाला पण जीवन करण्याचा हक्क आहे आणि आम्हाला पण असं वाटतं की आम्हाला चांगले ग्राउंड भेटावं खेळायला लोक आमच्या परिसरात बॉल गेला की छपरावर लोक ओरडतात. Can we imagine our lives and our neighborhood without any public space for recreation, play, and various other outdoor activities? Then why should children living in urban slums be devoid of public spaces to play and enjoy? With 65 million people living in slums, as per the census 2011, the basic priority of securing a living space pushes out other priorities, especially
a proper and a safe public space. Good quality of public space to play for children is as important as having a house to live. Playgrounds for children in slums are the garbage dumping yards, narrow lanes, and streets outside their houses. JNNURM and RAY, both these schemes mention about the provision of social amenities like community halls, childcare centers, parks, and playgrounds for children in urban slums. But under JNNURM, provision of parks and playgrounds did not receive importance as against the provision of basic services for urban poor. Merely providing an empty land for children to play does not make a playground. A playground needs to be designed keeping in mind the needs of a child and incorporating their dreams and vision. नमस्कार मो नाम समीरंजन प्रधान मु सालियासाई बस्ती रहे सालियासाई बस्ती पिला मानकर मुख्य कारण होची खेल पड़िया आमे सरकार को जे पिला माई खेल पड़िया करबा आवश्यक हम सारे खेल पड़िया ना आमे खेलबा को असुविधा होए आमे खेलबा को रोड किंबा पड़िया ए पड़िया रे खेलु ए पड़िया रे काच सब भांगी पड़ता है गोड़ रे फुटी जाए फल असुस्थ होता आमको गोटे खेल पड़िया दरकार आम साइरे किछि नले 50 पिला रुहंती एठारे वर्षा हेले आ खेली आ जगह नाही तेणु आमे सरकार अनुरोध करछु जे गोटे खेल पड़िया देबे वर्षा दिन हेले पानी जमी आउची फल खेली आ सुविधा होनी खेलला आडू आम गाड़ी मोटरसाइकिल एता भय रही थाए तेणु आम रास्ता रे खेलुनु The phenomenon of absence of electricity in slums appeared to be largely confined to non-notified slums. At all India level, only 6.5% of all slums had no electricity. According to the National Sample Survey Organization, the corresponding figures being 11% for non-notified slums, but only 0.1% for notified slums. In the slums, the electric wires dangle dangerously from the poles, increasing the risk of electrocution. High-tension electric wires passing over slums often cause fires. It is evident that slum fires cause death and severe injuries to human lives, mostly with children. तुटा घर अच्छी और से बहुत छोट घर और बहुत लंबा साई और से लाइट नथिबारु बहुत अंधार दिसे और से आमे पाठ पढ़ी न थाउ आमे खरा दिने रही पार न थाउ आमको लाइट दियो और आमको जेमिति पाठ पढ़िबार असुविधा न होए और खरा बेला किछि असुविधा न होए बिजली नहीं आती तो रात में हम गिर जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा यहाँ का रोड भी सही नहीं है यहाँ पर बिजली रहता ही नहीं है बिजली नहीं रहने की वजह से हम कैंडल में पड़ते हैं तो हमारी आँख खराब हो जाती है अनेक बस्ती विद्युत शक्ति अभाव पिलाने पाठ पढ़ी पार संध्या बेले विद्युत रोषे कार्य असुविधा हो रास्ता घाटे विद्युत बल्ब नक्सीडेंट मान हो पढ़ला बेले विद्युत शक्ति नम पढ़ार असुविधा हो पिला पढ़ार असुविधा हो आम विद्युत शक्ति जेहेतु न था आम विद्युत उपकरण मान चली पानी तो आमर मनोरंजन टीवी चली पानी बाहर मनकर वर्षा हेले आम खेलवा को न जाए टीवी कि लाइन थो आम टीवी केमी देखू सहित विद्युत तार विद्युत थिले विद्युत केतेक बस्ती विद्युत थिले विद्युत तार गुड़िक असुरक्षित भाव में झुली था असुरक्षित विद्युत तार घर मानक निआ लगी जाए फल लोक मैंने सहित पिला मृत्युहातर शिकार होती
सहित रास्त विद्युत तार पड़ी पानी सक जता कौन जातिर मृत्यु घटी। तेणु आम चाहूँ आम बस्ती मानक सदा सर्वदा भल विद्युत संचालन हो जहाद्वारा कि आम्भे मैंने सुरक्षा बची पार। Poor transport system and hazardous roads and pathways near which mostly the slum dwellings are situated make the children more vulnerable to accidental risks. The poor settlements without sidewalks or crossing lights are also unsafe for young children residing there. Lack of safe modes of transport also prevent children from exploring and participating in community life. Many slum dwellers are too far away from hospitals and schools for children to make use of their facilities because they cannot afford to use private auto rickshaws to reach them, and there is no cheaper public transport for them as well. सिटी बस सिटी बस आसुनी डाक्तरखाना जावा असुविधा डाक्तरखाना गाँ अंडा गले असुविधा होची आउ दुई दिन थरे टैंकर पानी आसूची टैंकर पानी आसा फल माँ भौणी मैंने बहुत विभिन्न प्रकार अभद्रभाषा गाड़ी एवं गंडगोल झगड़ा सब कली सृष्टि करते ये आम रास्ता नथिया फल बहुत असुविधा होची गोटे गाड़ी गला गोटे गाड़ी जीवा स्कूल गला बेले आम अलिया फलिया पड़ी था अलिया पड़ी थे आम गले चकुड़ी चकुड़ी से जाऊँ गले आम विभिन्न प्रकार रोग होची। आम बस्ती रे रास्ता नथिबारु पिला माने जिबा आसा भी पानांती आ वर्षा पड़े बहुत कादो होची अलिया जमी रोची आ गोटे गाड़ी रू दीटा गाड़ी जीवार जाई पार ना आ पिला माने हठात पळी आछंती कार क्षति हबो से समय रे एम्बुलेंस वा दमकल आसी पार ना हम गमनागमन वा रास्ता को समतल करबा उचित आम चाहूँ समस्ते जमी आम गमनागमन करने भल कच्चा रास्ता दरकार आम कच्चा रास्ता दरकार पिला माने जीवा भी रास्ता दरकार ड्रेन मध्य साइड रहा दरकार पानी कादुआ भी हम ना आम सरकार को सूचना जनाऊँ। Air pollution is recognized as the major cause of respiratory diseases among the children living in urban poverty. Epidemiological studies of air pollution and children's lung functions reveal that living in areas of high air pollution is associated with lower lung function, and children with poor nutrition who spend significantly longer time outdoors in polluted environments have a greater risk of being affected by the air pollution. Poor indoor air quality poses threat to children's health. Indoor air pollution due to fuel used for cooking poses the risk of respiratory infections among children. The World Health Organization estimates that air pollution leads to 3.1 million premature deaths worldwide every year. It is known that the level of air pollutants in slum settlements is likely to be higher than in non-slum dwellings. This is because of close proximity to industries, dust from unpaved roads, poor waste disposal, and burning of trash materials. Outdoor air pollution in poor urban areas has been linked to respiratory infections, heart problems, lung cancer, and undesirable pregnancy outcomes such as low birth weight and stillbirths. आमर एठी मुख्य समस्या होची विशुद्ध वायु आमକୁ मिलुनाही जहाँफल अलिया आवर्जना पड़ुथिबारु से वायु दूषित होची लोक मैंने बाहर झाड़ा बसुआर दूषित होची डंपिंग गाड़ी अलिया थिले भी दूषित होची घर गुड़िक ना आम वायु चलाचल झरका ना जहाँफल आम वायु निश्वास प्रश्वास नहीं पारना आ घर लगी लगी रही अच्छी झरका न निश्वास प्रश्वास नहीं पारूँ से आमको बहुत प्रकार रोग आक्रांत होचु जहाँफल श्वास रोग आदि सब रोग
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପାଇଖାନା କରାଯାଉ, ଡମ୍ପିଂ ଗାର୍ଡ ସଫା କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘର ମିଳିବ ତାର ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଝରକା ଥାଉ। Soil pollution also has a number of harmful effects on human health. The harmful effects of soil pollution may come from direct contact with polluted soil or from contact with other resources such as water that has come in direct contact with the polluted soil. In most of the slum settlements, this happens due to open defecation, open dumping yards, and poor garbage management. Children are usually more susceptible. This is because kids are more sensitive to the various pollutants and they come in close contact with the soil by regularly playing on the ground. Thus, for kids, soil pollution always involves higher risks than for adults. ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ଅସୁବିଧା। କାରଣ ଆମର ମୃତ୍ତିକାର କୁପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଆ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ମାନଙ୍କରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ମାଟି ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯାଇକି ମାଟି ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଯାହା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହେଉଛି। ଆମର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନିଯୋଗ କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଓ ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଯେଉଁ ବାହାର ପାଣି ତା ଦେହରେ ପଶି ବର୍ଷା ପାଣି ତା ଦେହରେ ପଶି ସେଟାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିକି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ। ଆମର ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଘର ପାଖରେ ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ଅଳିଆ ଜରି ପକାଇକିରି ଆମର ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିବାରୁ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଆସିକିରି ଆମର ରାସ୍ତାରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘର ପାଖରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ଜମିକି ରହି ଆମର ବହୁତ ଯେଉଁ ମାଛି ମଶା ଆସିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ଆମର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦରକାର, ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଖାନା ଦରକାର, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦରକାର, ତାପରେ ନଳକୂପ ଚାରିପଟେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ନଳକୂପ ଦରକାର। ଆମର ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥରେ ରହିପାରିବୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ।